तो आज वीडियो देखिए न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन। न्यूटन्स केतरा लॉ अच्छे केतरा डेरिवेशन अच्छे से लॉ जो नहीं सब डिस्कस करिए आज वीडियो। तो न्यूटन टोटल 3टा लॉ अच्छे। तो 3टा लॉ रू स्टार्ट करिए फर्स्ट लॉ रू। तो फर्स्ट लॉ होची अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन स्टेट दैट एवरी बॉडी कंटिन्यूस इन द स्टेट ऑफ रेस्ट और यूनिफॉर्म मोशन इन a straight line until unless it is compelled by external force to change the state. तो न्यूटन को फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन इज सेटा also known as law of inertia. तो inertia कौन द टेंडेंसी ऑफ बॉडी टू मेंटेन स्टेट और of rest or uniform motion in a straight line is called inertia. तापर न्यूटन को सेकंड लॉ होची अकॉर्डिंग टू न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन द रेट चेंज ऑफ मोमेंटम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू अप्लाइड force. तो that was the rate change of momentum is directly proportional to applied force. तो F proportional to dp by dt. तो F equal to k into dp by dt. तो k होची गोटे कांस्टेंट. तो let k equal to 1 F equal to dp by dt. तो F equal to d by dt of p. तो मोमेंटम रो फार्मूला होची p equal to mv. तो p जगह mv पड़ला. तो F equal to d by dt of m into v. तो m बाहर बाहर पड़ला. तो m F equal to m into dp by dt but a equal to dp by dt. F equal to ma रहला न्यूटन को सेकंड लॉ. तापर थर्ड लॉ कौन होची न्यूटन को थर्ड लॉ होची अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन एवरी फोर्स हैज इट्स इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन. गोटे फोर्स रो इक्वल और ऑपोजिट रिएक्शन अच्छी. तो एफ बी इक्वल टू माइनस एफ बी ए. द लिमिटेशन ऑफ न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन न्यूटन को लॉ केतरा लिमिटेशन देखिए. न्यूटन्स लॉ इज नॉट एप्लीकेबल फॉर practical moving with velocity comparable to speed of light. Newton law is not applicable for subatomic. Newton's second law is real law of motion because other two law can be derived from it. तो अबे न्यूटन को दीटा लॉ भी किमिति डिराइव करिया बोले सेकंड लॉ फर्स्ट लॉ फ्रॉम सेकंड लॉ आउट होची थर्ड लॉ फ्रॉम सेकंड लॉ थर्ड लॉ केମିତି प्रूव करिया और सेकंड लॉ फर्स्ट लॉ केମିତି प्रूव करिया. अकॉर्डिंग टू फर्स्ट देखिया कि सेकंड लॉ फर्स्ट लॉ अकॉर्डिंग टू न्यूटन सेकंड लॉ F equal to ma if internal force is 0 F equal to 0. तो 0 equal to m into a m not equal to 0 but a equal to 0. If acceleration is 0 then the velocity is in constant. तापर डेरिवेशन ऑफ न्यूटन थर्ड लॉ फ्रॉम सेकंड लॉ रू थर्ड लॉ केମିତି प्रूव होइछे देखिए. लेट अस कंसीडर टू बॉडी हैविंग मास m1. द बोथ बॉडी exerted force on one another. Let FAB is the force on body A due to B. Similarly, FB is the force on body B due to body A. According to Newton's second law of motion, F equal to dp by dt. Force on body A due to body B. FAB equal to dpa by dt. ये इक्वेशन 1 दे दो. Force on body B due to body A. FBA equal to dpb by dt. ये इक्वेशन 2. Add in equation 1 and 2, then we get FAB plus FBA equal to dpa by dt plus dp by dt. So in internal force is if internal force is 0 F equal to 0. तो 0 equal to dpa by dt plus dpb by dt. तो 0 equal to FAB plus FBA. तो FAB equal to minus FBA. तापरे impulse. It is defined as large force acting on a body for small time duration. but small time duration जो large force ଗୋଟେ body ଉପରେ ପଡୁଛି ସେଟାକୁ impulse ବୋଲି କହୁଛନ୍ତି. impulse ଟା ହେଉଛି ଗୋଟେ vector quantity. याको represent କରାଉଛି the symbol of J. तार फॉर्मूला होची J equal to force into delta key equal to change of momentum. आर यूनिट होची न्यूटन into सेकंड और डायमेंशन होची m1 l1 t minus 1. तो impulse momentum theorem होची according to impulse momentum theorem the change of momentum is equal to impulse. तो J equal to change of momentum J equal to pb by pt. एडा को प्रूफ करियार थ्योरम को दी प्रकार मेथड अछि. तो फर्स्ट प्रूफ मेथड 1 देखिया
So we know that F equal to m in Newton का second law formula, but A equal to v minus u by t. एडा जो A equal to v minus u by t आसी एडा इक्वेशन ऑफ मोशन v equal to u plus at रू एडा रो एक्सेलरेशन कराई ची. तो F equal to m into v minus u by t. तो F into t डाकू F आड़े नहीं मल्टीप्लाई कराला तो m डाकू भीतर मल्टीप्लाई कराला तो F into t equal to mv minus mu. तो F into t होची j. J equal to mv minus mu. तो J equal to charge of momentum. तापर मेथड 2 फ्रॉम न्यूटन सेकंड लॉ F equal to dp by dt. तो F dt equal to dp. इंटीग्रेटिंग बोथ साइड वी गेट F dt equal to dp. लोअर लिमिट होची 0 to 8t आउटर होची pi to pf. तो इंटीग्रेटिंग पूरा कले आ मिलियो J equal to चेंज ऑफ मोमेंटम. Tap law of conservation of linear momentum. According to this law, when no external force applied on a body, then total linear momentum before collision is equal to linear momentum of after collision. गोटे बॉडी ऊपर जदि किसी external force पड़ुनी तो तार तो से बहुची before linear momentum of before collision is equal to linear momentum of after collision. Let us consider two objects having mass m1 and m2 moving with velocity u1 and u2. If u1 is greater than u2, then after a certain time interval they will collide with each other. तो ये तले डायग्राम जब देखिए बिफोर कॉलिजन रो ड्यूरिंग कॉलिजन आफ्टर कॉलिजन तो सब डायग्राम जा अच्छी तापरे अच्छी initial momentum of a body equal to m1 into u1, initial momentum of b body equal to m2 u2, तापर final momentum of a body equal to m1 v1, final momentum of b body equal to m2 v2. According to Newton third law, Fab equal to minus Fa, impulse on a body. J equal to Fab into delta t equal to change of momentum. Fab equal to into delta t equal to m1 v1 minus m1 u1. F equal to m1 v1 minus m1 u1 by delta t. एडो इक्वेशन 2 दिया ला तो impulse on b body. jb equal to fb a into delta t equal to change of momentum. fb a equal into delta t equal to m2 v2 minus m2 u2. तो fba equal to m2 v2 minus m2 u2 by delta t. एडो इक्वेशन 3 दिया ला. So putting equation 2 and equation 3 in equation 1 we get m1 v1 minus m1 u1 by delta t equal to minus of m2 v2 minus m2 u2 by delta t cancel alla. तो last term मिलुची m1 u1 plus m2 u2 equal to m1 v1 plus m2 v2. Total momentum of before collision equal to total momentum of after collision. तापर अच्छी apparent weight of body in a lift. Consider a body mass of m placed on weighing machine in a lift. The actual weight of body is m into g in act vertically downward and the normal reaction is r, which represent apparent weight. तो फास्ट जो लिफ्ट इज अ रेस्ट लिफ्ट जो कन्स्टांट रोचे तो से बॉडी उपरे केतेटा फोर्स पड़ुची फर्स्ट देखिया फ्री बॉडी डायग्राम हिसाब से. तो से जो बॉडीटा विंग मोशन गोटे तो फोर्स पड़ुची एम इंटू जी एटा सब गोटे बॉडी उपरे पड़ो ग्रेविटेशन अच्छी आउ गोटे फोर्स पड़ुची. तो जो बॉडीटा गोटे मनीषटा गोटे विंग मशीन उपर ठियाई से तलाडू प्रेसर पकाउची आउ से विंग मशीन भी ऊपर आड़ू ठेलुची दुईटा फोर्स पड़ुची. तो तल ऊपर जो तल पड़ा फोर्सटा निया हुए फिजिक्स ऊपर पड़ा फोर्स निया होचे तो साड़ा ऊपर निया हवा फोर्स नियाई आर सब बॉडी फ्री बॉडी डायग्राम रे एमती कर हुए. तो नेट फोर्स आर माइनस एम जी इक्वल टू एम इंटू एड आर जीरो आर माइनस एम जी इक्वल टू जीरो तो आर इक्वल टू एम जी. व्हेन लिफ्ट इज एट रेस्ट देन रियल वेट ऑफ ऑब्जेक्ट इज इक्वल टू अपरेंट वेट. तापर केस 2 व्हेन लिफ्ट इज मूविंग अपवर्ड जो लिफ्ट ऊपर जाऊँगी. Let us consider the object placed inside lift is moving upward with acceleration a, then apparent weight of object is greater than real weight. तो बॉडी अच्छी तार से बॉडीटा लिफ्ट भर बॉडी अच्छी वेइंग मशीन उपर ठिया सी ऊपर
ए एक्सेलरेशन ए रे ऊपर अपवर्ड मूविंग होची तो तापर केते फोर्स पड़ुची देखिया तो फास्ट गोटे फोर्स पड़ुची एम इंटू जी आउट ऊपर आड़ जाऊँगी तो से बॉडीटा ताकू तलू प्रेशर पकाउछ विंग मशीन उपर तो सी भी ताकू ठेलुची तो ऊपर ठेला फोर्स होची गोटे आर जोड़ा नॉर्मल फोर्स तो एफ नेट इक्वल टू एम इंटू ए आर माइनस एम जी इक्वल टू एम ए तो आर इक्वल टू एम जी प्लस एम एम जी प्लस एम ए रु गोटे एम कमन बाहर पड़ा तो आर इक्वल टू एम इंटू जी प्लस ए तापर केस 3 when the lift is moving downward with their acceleration a. Let us consider the lift is moving downward with acceleration on a. Then apparent weight of object in loose then the actual weight. तो गोटे लिफ्ट भितर गोटे बॉडी अच्छी तो से बॉडी उपर केतरा फोर्स पड़ुछ फास्ट देखिए गोटे फोर्स पड़ुची एम इंटू जी ग्राविटेशनल जो आउ गोटे फोर्स पड़ुची तो आउ गोटे फोर्स अच्छी बॉडीटा विंग मशीन उपर ठिया से तल प्रेशर पकाउची आउ विंग मशीन भी ऊपर आड़िया ठेलुची तो गोटे फोर्स पड़ुची आर तो दुईटा फोर्स टोटल पड़ुची आ एक्सेलरेशन जो बॉडी डाउनवर्ड को जाऊँगी डाउनवर्ड मूव करुँची तो नेट फोर्स हम एफ नेट इक्वल टू एम इंटू ए एम जी माइनस आर इक्वल टू एम जी माइनस एम ए इक्वल टू आर एम एथुर एम टा कमन बाहर पड़ो एम इंटू जी माइनस ए इक्वल टू आर तापर केस 4 when lift is under free fall motion मनर लिफ्ट मूव होची तार वाइट कटिगला तो से जो बॉडीटा अच्छे लिफ्टा से केमिति कौन से केमिति मोशन होची सेटा देखिया when the cable attached to the lift is broken then the lift falls freely the person inside the lift experience weightless जतले एमिति केबल गोटे कटि अच्छे लिफ्ट ता भितर थिबा बॉडी मासटा से जतल तलु आसतो सेटा वेटलेस है मन तार बॉडी वेट किछि नथियो तो नेट फोर्स हो जाओ एफ नेट इक्वल टू एम इंटू ए एस ए इक्वल टू एम जी माइनस आर इक्वल टू एम एस ए इक्वल टू जी ग्रेविटेशनल फोर्स ड्यू टू एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी तो एम जी माइनस आर इक्वल टू एम जी माइनस एम जी जीरो हो तो आर इक्वल टू जीरो तापर आसला पुली ड्रॉप सिस्टम let us consider two blocks having mass m1 and m2 connected a string the tension force developed is t we have to calculate acceleration and tension across their system तो गोटे पुली सिस्टम गोटे वर्टिकल मोशन रे अच्छी तो गोटे पुलीटे अच्छी तारे दुटा बॉक्स झुलुची गोटे बॉक्स झुलुची ए पॉइंट गोटे बी पॉइंट तो ए पॉइंट जो बॉक्स झुलुची तार आड़े केतरा फोर्स पड़ुची फास्ट देखिए फ्री बॉडी डायग्राम तो गोटे फोर्स पड़ुची एम इंटू जी आउ गोटे फोर्स टेंशन ताकू उपरू झिकुची टेंशन से गोटे फोर्स पड़ुची आउ गोटे फोर्स अच्छी बी बॉडी रे देखिया बी बॉडी रे भी सेम एम टू जी गोटे फोर्स पड़ुची आउ गोटे फोर्स उपरू झिकुची जो टेंशन फोर्स तो नेट फोर्स ऑन ब्लॉक हैविंग मास m1 f net इक्वल टू m1 इंटू ए तो m1 g माइनस टी इक्वल टू m1 a इक्वेशन 1 दे देड़ा तापर नेट फोर्स ऑन ब्लॉक हैविंग मास m2 तो t माइनस m2 g इक्वल टू 2 m2 a एटा इक्वेशन 2 adding equation 1 and 2 we get m1 g minus t minus m2 g equal to m1 a plus m2 a minus t plus t cancel है तब मिलला m1 g माइनस m2 g इक्वल टू m1 a प्लस m2 a तो g कॉमन बाहर पड़ला g इंटू m1 माइनस m2 इक्वल टू a इंटू m1 प्लस m2 a कॉमन बाहर पड़ला तो एक्सेलरेशन फॉर्म में मिल जाऊँगी g इंटू m1 माइनस m2 बाई m1 प्लस m2 फॉर टेंशन इक्वेशन 1 और 2 को डिवाइड कर ले मिल जाए तो m1 g माइनस t बाई t माइनस m2 g इक्वल टू m1 a बाई m2 a तो ए को कैनसल है m2 को m1 g माइनस टी मल्टीप्लाई कराब और m1 को t माइनस m2 g मल्टीप्लाई कराब तो मल्टीप्लाई कले मिल m1 इंटू m2 इंटू g माइनस m2 t इक्वल टू m1 t माइनस m1 m2 g तो m1 m2 g प्लस m1 m2 g इक्वल टू m1 t प्लस m2 t सब को एपटे सब जो सामान साइज रे लिखा तो 2m1 m2 g इक्वल टू एटू t कॉमन बाहर पड़ला t इंटू m1 प्लस m2 तो टेंशन फोर्स आम मिलला 2m1 m2 g बाई m1 प्लस m2
तापर connected block system. Let us consider three block of mass m1 m2 are connected and the external force F is applied to the block having mass m1. All the three masses start moving with acceleration a. We have to calculate common acceleration and contact force between the block. तो तीन ब्लॉक अच्छे m1 m2 m3 तो गोटे आड़े एक्सटर्नल फोर्स पड़ुची m1 आड़े तो m1 आड़े एक्सटर्नल फोर्स पड़े कर से m1 टा m2 आड़े गोटे फोर्स पकड़े तो m2 को m3 गोटे फोर्स पड़ला तो से मूविंग होउछंदी माने गोटे जगह और जगह डिस्प्लेस होउछंदी तो नेट एक्सेलरेशन देखिए एज एफ इक्वल टू एम इंटू ए ये तीन मास अच्छे m1 m2 m3 तो तीन जो मिसाई जो m1 प्लस m2 प्लस m3 इंटू ए तो आम ए फॉर्मूला मिला ए इक्वल टू एफ बाई m1 प्लस m2 प्लस m3 कॉन्टैक्ट फोर्स तो m1 जो कॉन्टैक्ट फोर्स पड़े फास्ट एक्सटर्नल फोर्स पड़ला तो एक्सटर्नल फोर्स पड़े m1 टा m2 आड़े गोटे फोर्स पकड़ा तो m2 आड़े जो फोर्स पकड़ m2 भी m1 को एपटू ठेलिला गोटे फोर्स तो दीटा फोर्स पड़ुଛି नेट फोर्स ऑन ब्लॉक m1 इक्वल f माइनस f1 इक्वल टू m1 a तो f माइनस m1 a इक्वल टू f1 एज a इक्वल टू f बाई m1 प्लस m2 प्लस f3 तो एक्सेलरेशन काटले तो f माइनस m1 इंटू f बाई m1 प्लस m2 प्लस m3 इक्वल टू f1 f माइनस m1 f बाई m1 प्लस m2 प्लस m3 इक्वल टू f1 तो f को एबे सब जारे गुणाई जियो तो सॉरी एफ को ए सब जगह एलसीएम निले एफ इंटू m1 प्लस एफ m2 प्लस एफ m3 माइनस एफ m1 f बाई m1 प्लस m2 प्लस m3 इक्वल टू f1 तो f1 रो फॉर्मूला मिला f इंटू m इंटू प्लस m3 बाई m1 प्लस m2 प्लस m3 इक्वल टू f1 तापर कंट्रोल फोर्स 2 तो जतले m1 टा m2 आड़े गोटे फोर्स पकेला तो m2 भी m3 आड़े फोर्स पकेला तो m3 आड़े फोर्स पकड़ m3 भी ताकू गोटे फोर्स पकेला तो सेटा होची f1 माइनस f2 इक्वल टू m2a तो f इक्वल टू m2 प्लस m3 बाई m1 प्लस m2 प्लस m3 माइनस f2 इक्वल टू m2a तो fm2 प्लस fm3 बाई m1 प्लस m2 प्लस m3 माइनस m2 इंटू 1 बाई m1 प्लस m2 प्लस m3 इक्वल टू f2 तो मो सबुजार f2 फॉर्मूला मिलची fm3 बाई m1 प्लस m2 प्लस mm3 आउटे क्रॉस केस 2 रही हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन पे तो लेट अस कंसीडर टू ब्लॉक ऑफ मास m1 m2 placed over horizontally surface the tension developed across starting is t गोटे टेबुल अच्छे टेबुल ऊपर गोटे पुली सिस्टम कराई तो पुली सिस्टम टेबुल ऊपर गोटे ब्लॉक अच्छे गोटे पुली गोटे ब्लॉक गोटे झुलुचे तो पुली ऊपर जो ब्लॉक गोटे झुलुचे तार देखिए केतरा से बॉडी फ्री बॉडी डायग्राम हिसाब से केतरा फोर्स पड़े गोटे तो फोर्स पड़े m1 इंटू जी आउट पड़े टेंशन सेमती m2 जो टेबुल ऊपर बॉडी अच्छी भी फोर्स पड़े m2 जी गोटे आउटे से बॉडी से जो ब्लॉक अच्छी से टेबुल ऊपर गोटे फोर्स पकाउछि तो टेबुल भी ताको ऊपर उठेलुछि तो जो ऊपर उठेला फोर्स गोटे आर नॉर्मल फोर्स तो नेट फोर्स एट पॉइंट ए एफ नेट इक्वल टू m इंटू ए m1 g माइनस टी इक्वल टू m1 a एटा इक्वेशन मान देता नेट फोर्स एट पॉइंट बी एफ नेट इक्वल टू m इंटू ए तो t इक्वल टू m2 a तो एबे तो तापर एडिंग इक्वेशन 1 एंड 2 वी गेट m1 g माइनस t प्लस t इक्वल टू m1 a प्लस m2 a t कैंसिल है mg इक्वल टू m1 प्लस m2 a कॉमन बाहर पड़ा तो हम a रा फार्मूला मिला m1 g बाई m1 प्लस m2 फॉर टेंशन इक्वेशन 1 और 2 को ऐड कर देले जो तो m1 g माइनस t बाई t इक्वल टू m1 a बाई m2 a कैंसिल है m2 को m1 g माइनस t रे मल्टीप्लाई कराबो m1 को t रे मल्टीप्लाई कराबो तो मल्टीप्लाई कले मिलूँ m1 m2 g माइनस m2 t इक्वल टू m1 t तो m1 m2 g माइन इक्वल टू m1 t प्लस m2 t तो m1 m2 g इक्वल टू t कॉमन बाहर पड़े t इंटू m1 प्लस m2 तो m1 m2 g बाई m1 प्लस m2 इक्वल टू t एति थला न्यूटन्स ऑफ लॉ रो न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन रो पूरा चैप्टर आउ जति इंपोर्टेंट डेरिवेशंस।